बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो अफ़गानिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है दीगर पड़ोसियों की तरह, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान यूँ अहम हो जाता है कि बड़ी हद तक पाकिस्तान का अमन भी अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इसलिए भी अहम हो जाता है कि अमरीका और मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक़ात की नोयत का तयन भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात ही करते हैं। यूँ हम कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी नज़र रखें, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान बावजूद हम अफ़गानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पे बात नहीं कर सके। इस दौरान अफ़गानिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तरफ अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में सदारती इंतखाबात हुए, और तीसरी तरफ इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए यानी तालिबान और अफ़गान हुकूमत और बाकी सिविल सोसाइटी के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां हो रही है। आज के जिरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका और तालिबान के माबैन क्या तय पा रहा है, और जो कुछ तय पा रहा है उसमें अफ़गान हुकूमत किस हद तक इन्वॉल्व है और पड़ोसी ममालिक किस हद तक इन्वॉल्व है। इसी तरह हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात या इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात कब शुरू होंगे और उसके कामयाबी के क्या इम्कानात है। तीसरी तरफ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या रोल प्ले किया है और अफ़गान हुकूमत उस रोल को किस नज़र से देखती है, और इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के ज़िमन में पाकिस्तान से किस तरह के किरदार की तवक्को की जा रही है। आज के प्रोग्राम में 3 अहम तरीन अफ़गान शख्सियात हमारे साथ होंगी। हमारे आज के जरगे में हमारे साथ शरीक होंगे डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल साहब, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो बैकग्राउंड में पीस प्रोसेस में किसी भी दूसरी अफ़गान शख्सियत से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो तालिबान के साथ भी राब्ते में हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ भी राब्ते में हैं, और अफ़गान हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं, और कतर और मास्को में जो 2 नशिस्तें हुई थी उसमें बुनियादी कोऑर्डिनेशन भी उन्होंने की थी। इसी तरह एक और अहम शख्सियत वो भी हमारे साथ होंगी, हिज़्ब इस्लामी के अपने दड़े के रहनुमा हैं। वो भी मास्को अमन मुज़ाकरात का हिस्सा थे और साबिक मुशीर भी रहे हैं अफ़गान सदर के। लेकिन आगाज़ हम करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि गुज़िश्ता साल के दौरान मुख्तलिफ़ जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके दरमियान पीस प्रोसेस के हवाले से कोऑर्डिनेशन के लिए अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी के खसूसी एलची भी थे। इससे पहले वो भी पाकिस्तान और ईरान में सफ़ीर रहे हैं, और इस वक्त वो डॉक्टर अशरफ गनी के इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज हैं। आप पहचान गए होंगे हमारे जरगे के पहले मेहमान जनाब मोहम्मद उमर दाऊदज़ई साहब। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बल पे ज़्यादा असर तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात का मुरतब होगा, तो ये बताइए कि क्या ये तवक्को दुरुस्त है कि वो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने को हैं और उनकी डील होने वाली है? Safi Saab, salam, and thank you for having me. It's great to see you again. My honor. And you know, in Afghanistan, I'm a great fan of Loya Jirga. In Pakistan, I'm a great fan of your Jirga. Thank you. Yeah, I'm honored. Thank you. Now, yes, since over the past 24 hours, some good news are coming that the US and Taliban has made enormous progress on agreeing to end the US-Taliban animosity. Now, I'm sure you remember that there were 4 points that the US had declared that nothing is agreed until there is agreement on all the 4 points. So what I'm assuming is that they must have agreed on all the 4 points. That's why they say they have made enormous progress. What 4 points were? The 4 points, the first was severing ties or breaking ties with Al-Qaeda. Second one was a plan for U.S. Exit or departure of the U.S. forces. Third one was ceasefire, and fourth one was intra-Afghan dialogue.
So I'm sure there is understanding and there is progress on all the 4 points. That's why we all claim that there is significant progress. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में बाकायदा मुआहिदा हो जाएगा तालिबान और अमरीकियों के माबैन? Yes, I think so. I can't say days, but maybe week or weeks that we will witness signing of an agreement between the US and Taliban. And at the same time, a communication between the US, a declaration between the US and the Afghan government from Kabul. Last time जब तालिबान और ज़ल्मे खलीलज़ाद के माबैन मामला तकरीबन तय पाए थे, लेकिन 2 प्रेसिडेंट उस पर खुश नहीं थे। एक अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और दूसरी तरफ अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने उस मामले को एक ट्वीट के ज़रिए वो वीटो कर दिया और वो प्रोसेस सारा ख़त्म। तो पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा इस प्लान को वो सैंक्शन कर चुके हैं? Yes, I think he has sanctioned it, but conditionally. And I'm not qualified to specify those conditions, but conditionally he has sanctioned it. अच्छा, लेकिन आप क्वालिफाइड भी हैं और डॉक्टर अशरफ गनी के इंतहाई करीब भी हैं इन दिनों, तो डॉक्टर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत उसको एतमाद में लिया गया है? Yes, you remember about a month ago, while President Ghani was on a trip to UAE, United Arab Emirates, President Trump gave him a call and briefed him, and they had a 45 minutes conversation on the peace plan for Afghanistan and on the talks with the Taliban, I mean between US and Taliban, and potentially between the Afghan government and Taliban. Subsequently, when President Trump visited Afghanistan, they had another extensive meeting and discussed the same matters. And now last night, Secretary Pompeo called Dr. Ghani and Dr. Abdullah and informed them of the main progress. Now a roadmap will roll out within the next few days. We will be witness to a roadmap that would specify when and how something can be signed between the US and the Taliban. मुश्किल मरहला शायद इंट्रा अफ़गान डायलॉग का है, तो कब इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होगा और उसमें अफ़गान गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा और अफ़गान सिविल सोसाइटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? Yes, I think that was the difficult part in the past also, what you call it or we call it intra-Afghan dialogue, which is basically the talk between the Islamic Republic of Afghanistan and the Tehrik-e-Taliban. Now, who will represent the Islamic Republic of Afghanistan? That's not an easy question to answer. That's not an easy problem to settle. It takes efforts and energy, but I think now we are in a position to put that team together. The Ministry of Peace has worked in Kabul with all the credible political leaders and with civil societies to consult them on how to put together the team. Now, in terms of mechanism, I'm thinking, or rather I know that President Ghani wants to revive the Leadership Council for Reconciliation, which we put together last year, but because all our efforts were shadowed by election, by presidential election, it didn't take off. Now, as the election is almost over, it's almost behind us, it's time that that's revived. इलेक्शन ओवर हो चुका है, लेकिन आप उनके कैंपेन के इंचार्ज थे, लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो रिगिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो पहले ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर अशरफ गनी की मुद्दत ख़त्म हो गई है, इसलिए वो लेजिटिमेट नहीं है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात जितना अहम काम करे। अब अगर उनका इलेक्शन मुतनाज़ा हो तो फिर उस सूरत में क्या वो इस प्रोसेस को लीड कर सकते हैं? According to our law, a president is legitimate until a new president is elected and sworn in. Until that day, president is legitimate. This happened in the past, and this is happening now.
Now, that question doesn't arise. But as far as the question of rigging, accusation of rigging is concerned, unfortunately, in our part of the world, in our democracies, even the newest, this is the norm that nobody accepts the verdict of the Independent Election Commission because democracy is not entrenched, because that culture is not entrenched. So there are accusations. लेकिन टर्न आउट जितना कम रहा, सिर्फ 1.5 मिलियन लोगों ने वोट डाले. That's a different issue. It's not illegal. It is according to the law. The law doesn't specify that at least what percentage should come out. But there were reasons for it. That was also shadowed by the peace talks and also propaganda against election, that there will be no election, or if you come out, Taliban would attack. There were so many reasons that people didn't show up. And a lot of votes were invalidated because people didn't go through the biometrics. They were not used to the biometric system. Women in rural areas didn't want to come out for voting because in the biometric they had to show their face. And you know, in our society, women don't in rural areas don't want to show their face. बज़ाहिर तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है अफ़गानिस्तान का, तालिबान उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है. वो वही अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत और उसकी बातें कर रहे हैं. तो क्या आप लोग पुरुमीद हैं कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान एक मीटिंग पॉइंट तक आ जाएंगे? When Taliban were in power in Kabul, they were saying in 1990s up to 2001, they were saying we don't need a constitution, Quran is our constitution. But when I met them in January 2016, and my friends and colleagues have been meeting them afterward, they are saying no, the country does need a constitution, but the current constitution, they have serious reservations, and they want to either have a new constitution or drastically amend this. Now, we also support amendment of the constitution because constitution is a man-made आप लोग document. इसके लिए ओपन हैं कि तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन के खातिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? Yes, that's an opportunity because there are some other difficulties also we are facing with the constitution. That would be an opportunity to amend. और उसके लिए अगर अबूरी हुकूमत बनानी पड़ी या तालिबान ने उसका मुतालबा किया, तो प्रेसिडेंट गनी क्या उस सूरत में फिर स्टेप डाउन होने के लिए तैयार होंगे? Interim government can be non-constitutional according to the current constitution. If somebody wants an interim government, then you have to amend the constitution first and then put a clause under what circumstances you can have an interim government. At present, that's non-constitutional. Now, as far as President Ghani's attitude is concerned, he had said many times that for peace and for sustainable peace in Afghanistan, even if his life is needed, he would not hesitate to give his life, which means he can go to extremes for peace. अच्छा दाऊदी साहब, हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में खून तो अफ़गानों का बह रहा है, कांदा अफ़गानों का इस्तेमाल हो रहा है, सरज़मीन अफ़गानों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमलन जंग मुख्तलिफ़ ममालिक की प्रॉक्सीज़ का होता है. तो ये जो पीस प्रोसेस है, इसमें क्या किसी स्टेज पे ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान वग़ैरह इनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है? और अगर नहीं तो क्या वो लोग अपने कंसर्न्स की खातिर या अपने इंटरेस्ट की खातिर इस प्रोसेस को सबूताज नहीं कर सकेंगे? Well, our future strategy, or rather our current strategy, is three tiers. The first one is to build national consensus amongst the Afghans that lives under the flag of the Islamic Republic. And the second part is the regional consensus or regional coordination on peace in Afghanistan. And the third one is international consensus and support. Now, we have the international consensus and support. We need to work on regional, and we need to work on national. Now, those countries that you mentioned within the region, I think almost all of them want peace in Afghanistan, and they want a central role for the people of Afghanistan in that peace process. As you mentioned, I was President's special envoy for building that consensus within the region, and I went around almost all countries in the region.
I found every country was cooperative. They had absolutely no reservation. But as far as that other statement of yours is concerned, that the war in Afghanistan is proxy, that argument we do not use anymore, because one side of the war is the Afghan National Defense and Security Forces, which is a constitutionally legitimate force, and they are representing people of Afghanistan and they are protecting people of Afghanistan. Now, if the other side can be called as a proxy of some countries in the region, that may be the case, but the Afghan state side is not proxy to any country. अच्छा, चले वो प्रॉक्सी नहीं है अगर स्टेट साइड जो है, लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ अब कतर प्रोसेस में, अमेरिकन ने भी पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया, हाई लेवल पे किया, तो अफ़गान हुकूमत इसके बावजूद भी पाकिस्तान से नाराज़ नज़र आती है। अफ़गान हुकूमत पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के रोल को किस तरह देखती है? Well, no, Afghan government is not in a tension with Pakistan government. Kabul always wanted good relationship. Even now they want good relationship. And when I was leaving 3 days ago Kabul, just before that I met President Ghani, and his advice and his brief to me was that we need to work through official channels with Pakistan, and we need to work through back channel diplomacy with Pakistan to further improve our relationship. Now, as far as Pakistan's role in peace is concerned, yes, they have helped the Taliban US talks, and that's proven and that's on record, and the US thanked Pakistan for that. We also appreciate Pakistan's role in that, because we want the US and Taliban to reach to a positive conclusion. But as far as the helping the talks between the Taliban and the Afghan government, there we wait for to see a positive role from Pakistan. आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ये मुज़ाकरात कतर में हुए, तो इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए बेहतर जगह कौन सी होगी और इसको कोऑर्डिनेट कौन सी ताकत करेगी? कोई मुल्क करेगा, यूएन करेगा, कौन सा फोरम मुनासिब होगा जो इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करे? These are the two questions that are under discussion and deliberation, brainstorming on it. One idea that in the past 2 days of actually today's talks in the conference that I was there was maybe a combined facilitation role by US, UN, and many other countries that are one way or the other involved. Maybe a team of those countries plus UN. That may be a good idea. But this was a brainstorming. This was not a decision. So that question is yet to be addressed. जनाब डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब, एक्सेलेंसी, हमें वक्त देने और हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो एक अहम जिहादी शख्सियत, हिज़्ब इस्लामी के अपने दड़े के सरबराह और अफ़गान सदर के साबिक मुशीर और मास्को में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के एक अहम किरदार जनाब वहीदुल्लाह सबाउन हमारे साथ होंगे।